Welcome you all. Today we are going to speak about life skills. What are the important skills to live a life peacefully, successfully? So 5 skills I wrote on the blackboard. Number 1 is motivational skills. Second is communication skills. Third is lifestyle modification. Fourth is accessibility and addiction. And fifth is an environmental awareness. Here are our 5 students who are going to speak about each particular point. Okay, so I would like to introduce them. Badal, Akshara, Tanuja, Poonam and Diksha. They are going to speak one by one. So our point number 1 is motivational skills important for life. So I would like to request Poonam to talk about motivational skills. Motivational skills involves the ability to inspire and encourage others and achieving the goals. Very good. Next is communication skills. Who is going to speak? Tanuja. Communication skills is the various aspect of encompass interaction and convenience between two persons. There are various types of communication skills: verbals, non-verbals, listening, confidence, feedback, and we have talked different through various skills in between communication. Very good. Very good. Third is lifestyle. Akshara will speak about lifestyle. लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन मीन्स जीवनशैलीची सुधारणा. जसं आपण 4 लोकांच्या वागतो बोलतो याच्यावरून आपले एज्युकेशन म्हणजे आपली पद्धत ठरते की आपण पुढच्याला किती महत्त्व देतो बोलण्याच्या. तसंच 4 लोकांच्यात गेल्यावर आपली राहण्याची पद्धत, बोलण्याची पद्धत, परत आपण कोणाला किती समाजात कोणाच्याबद्दल किती अपमान करतो, किती महत्त्व देऊन बोलतो, याचं जर लोकांनी जर आपल्याला समजून घेतलं तर ते आपल्याला आपल्यासारखं वागणं, दिसणं, बोलणं जर करत असतील तर ते मोटिवेशन पण ठरतं आणि लाईफस्टाईलचे स्किल पण ठरते. Very good. Very good. Next is accessibility and addiction. Badal will speak. Hello friends, my topic is accessibility and addiction. Accessibility means implementing something in your life to achieve your skills and your goal. And addiction means you are giving your more time in a particular thing. For example, playing games and watching movies, it's addiction, right? So giving more time is what you are taking in addiction, right? Very good. And next is environmental awareness. Diksha will speak. सो एन्व्हायरमेंटल अवेअरनेस म्हणजे पर्यावरण जागरूकता. प्रत्येक व्यक्ती किंवा प्रत्येक स्पॉट, त्याचबरोबर कोणताही बिझनेसमॅन जेव्हा तो कोणताही बिझनेस करतो तर त्याला त्याच्या सराउंडिंग, त्याचं जे एन्व्हायरमेंट आहे त्याचं सुद्धा ध्यान ठेवावं लागतं. तर त्याचबरोबर त्याला त्या सराउंडिंगचं सुद्धा ध्यान ठेवावं लागतं. तर त्याचबरोबर त्याला अनेक अशा पर्यावरण व त्याचबरोबर त्याच्या रिलेटेड असलेल्या वस्तूंची सुद्धा सोबत करावी लागते. Very good. Very good. Very good. Thank you. Thank you all. Thank you. Very good explanation is given by all of them. So I would like to thank all of you for participating in such a good topic. Now I will tell you what are these life skills. Focus. Number 1, motivational skills. Motivation means an inner psychological drive or an urge in the mind of an individual which tells him what ought to do, what ought not to do. इंसान के दिल से निकली हुई वो आवाज जो उसको बताती है कि तुमको ये करना चाहिए या तुमको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए. तो पॉजिटिव मोटिवेशन एंड नेगेटिव मोटिवेशन. Who can motivate you? You yourself. When you will decide मुझे जिंदगी में ये बनना है तो सोच के नहीं बन सकते खाली. एक्शन इज इंपॉर्टेंट. उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा. You will have to maintain your physical health, mental health. You will have to balance both the things. Mental health is equally important like physical health. So continuous exercise, meditation, pranayama, yoga, all these are the techniques of managing the stress. In today's life, everybody has stress. Our life is stressful. After the implication of technology, the lifestyle has radically been changed. Radical changes are there. If I compare your lifestyle with my childhood, then I find that there is tremendous difference in that lifestyle.
what I was living in my childhood and how you are living now, there is a difference. You have to understand that. You have to motivate yourself. Motivation is very important. इनर साइकोलॉजिकल ड्राइव का मतलब ही वही है कि जो आपको जगाती है आपके दिल की आवाज कि नहीं भाई बहुत कष्ट करना पड़ेगा जिंदगी में। जैसे कोई किसान करता है खेती में 10 चीजें करनी पड़ती है उसको, कल्टीवेशन करना पड़ता है, फिर उसको पूरा प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ता है, उसके बाद बीज बोना पड़ता है, फिर पानी डालना पड़ता है, फिर अननेसेसरी ग्रास को कट करना पड़ता है। एग्जैक्टली कंटिन्यूसली पानी भरते रहना पड़ता है, देन क्रॉप कम्स। वैसे अपनी जिंदगी के बारे में होता है, रोज आपको कष्ट करना पड़ेगा एंड देन यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल आफ्टर नंबर ऑफ इयर्स। दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। सो मोटिवेशन इज एट द बेस। सेकंड इज कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, communication is an exchange of ideas, thoughts, values, goals and beliefs. Then it is communication. Communication inculcates language. Now if you are going to work in corporate sector, if you are going to international level, my friends understand that English will be very important for you. You shall be very good communicators of English. Is that clear? Why? Why it is important? ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, मराठी माझी माय ओटी अमृता तेही पैजा जिंके. आपल्या भारतामधल्या ज्या भाषा आहेत, आपली मराठी भाषा, संस्कृत ह्या जगामधल्या सर्वश्रेष्ठ भाषा आहेत आणि अजून अशा अनेक तेलुगू असेल, तमिळ असेल, ह्या खूप श्रेष्ठ भाषा आहेत, उर्दू असेल. But why English is important? Because unfortunately or fortunately, what you want to say, you say. But it is the only language which is understandable by most of the countries in the world. And corporates are working in English. And that's why we have to learn English. We don't have option. I hope you will understand. So grammatically, then vocabulary wise, you shall be very strong. And you can improve your communication skill by speaking with each other. Improvement is necessary. It is continuous improvement. And then you can excel your communication. And communication plays predominant role. Whatever functions of management are given, like pause to power by Luther Gelling. Pause to power is POSDCORB. P for planning, O for organizing, S for staffing, D for direction, C for control, O for coordination, R for reporting, B for budgeting. These are the functions of any management of any corporate in the world. Out of this, direction inculcates three things: leadership, motivation and communication. So communication is the most important element in management. That has been said by many people. So work on these skills. Lifestyle modification. Now Akshay has said lifestyle modification. How we live, how we relate with people, how we deal with people, what are our general manners, what are our etiquettes, what is our communication style, what is our dressing sense, what is our hairstyle, what is our general style of wearing and ornaments. All these parameters are important. क्या सही है क्या गलत है इसमें मतलब अपने अपनी मर्जी का ज्यादा सवाल होता है इसमें. बट इन जनरल योर लाइफस्टाइल शुड बी वेरी गुड. लोगों से आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए. हमारा जो देश है यहाँ पे संस्कारों को बड़ा महत्व दिया जाता है. एग्जैक्टली संस्कार जिसको बोलते हैं हम, जो माँ बाप या गुरु टीचर्स आपके करते हैं, आपको सिखाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है. तो अपने से बड़े व्यक्ति को रिस्पेक्ट देना, उनकी बात सुनना, उन्होंने कुछ काम बोला तो कर देना फटाक से, गलत बात नहीं करना, उल्टा जवाब नहीं देना, ये सारा संस्कारों का एक भाग है. और ये सीखना बहुत जरूरी है सबको. तो आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत मेरिट वाले हो, लेकिन आपके पास जनरल एटिक्वेट्स नहीं है, क्या फायदा उसका. मैं 3 चीजें आपको बोलता हूँ, जिंदगी में याद रखना: politeness, courtesy and patience.
These are the three things. I will repeat. Politeness, courtesy and patience. नम्रता, प्रामाणिकपणा आणि संयम या तीन गोष्टी that will let you reach at your destination. That will drastically help you in reaching your goals. Always focus on these three things. Politeness, courtesy and patience. Very important. सबसे important अगर कुछ है तो patience. संयम होना बहुत जरूरी है जिंदगी में. सब कुछ मिलता है, but patience is required. Then accessibility and addiction. Addiction is what? Simple example of mobile. Badal has given. You decide yourself. Apple के मोबाइल पे आता है statistics. WhatsApp कितनी देर यूज किया, Google कितनी देर यूज किया, कौन सा ऐप कितनी देर यूज किया. You get the statistics. You find out every day. 10 hours you are surfing mobile every day. If you check your own statistics. Keep aside that mobile for some time in a day. When it is important, you are browsing some important information, it is okay. But all the time it shall not be on. It shall be kept aside. I will suggest you read from the books. Practically you read from the books. Mobile से या computer से पढ़ने से many software engineers are facing eye issues, cornea issues. They are facing seriously. Continuously, if you are watching on that computer screen or your mobile screen, it is going to reduce the capacity drastically of your eyes. So take care of that. Your addiction can be controlled by yourself. कोई किसी को आके बताने को टाइम नहीं है. दुनिया बिजी है, अपने माँ बाप भी बिजी है, बच्चे भी बिजी है. किसी को किसी के लिए समय नहीं है. आपकी जिंदगी है, कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. That is solely your decision. तो अपना परीक्षण करो. Assess yourself, evaluate yourself. How much time in a 24 hours you are devoting on your studies, exercise, yoga, meditation, what I have said, or gathering some extra knowledge, reading novels, international history, international affairs. How many people amongst you are watching news channels? How many are reading newspapers on daily basis? This is my question to all of you. And you get answer from yourself. अगर आप वो नहीं कर रहे हो, तो वो करना सीख लो. अगर आपको इस कंपटीशन में टिकना है, आगे जाना है, बढ़ना है, बड़ा बनना है, तो आपको ये सब करना होगा. उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है. लास्ट इज एनवायरमेंटल अवेयरनेस. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनवायरमेंटल अवेयरनेस. मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक पेड़ लगाया, जब उसको पानी देके बड़ा किया? फिर आपको बहुत अच्छा किया. 3 लोगों ने 3 पेड़ लगाए, 5 लोगों ने 5 पेड़ लगाए, 6 लोग. वेरी गुड. 100 में से 6 लोगों ने सिर्फ पेड़ लगाए. आपने देखा क्या वो पेड़ जीवित है या वाइप आउट हो गए? आए. वेरी गुड. फ्रेंड्स, आने वाली जो जनरेशन है, सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट है. सस्टेनेबिलिटी, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? हम जो जी रहे हैं, फ्री में यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन, फ्री में यूज कर रहे हैं पानी जो नेचर ने हमको दिया है, फूड जो नेचर हमको दे रहा है. आने वाले जनरेशन के लिए हमने क्या बचा के रखा है? एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा सब कुछ. समझ में आया? एक ना एक दिन ये खत्म होने वाला है. तो उसको बढ़ाना अपना काम है. मैक्सिमम पेड़ लगाओ, उसको पानी दो. ऐसा नहीं कि पेड़ लगाया, फोटो निकाला, सोशल मीडिया पे डाला, निकल गए, 4 दिन बाद वो पेड़ मर जाता है. ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए. जितनी मोहब्बत अपने आप से करते हो उतनी पेड़ों से करो. देखो आपका जीवन बदल जाएगा. समझ में आया? साउथ अफ्रीका में एक लेडी थी, वो अंगारी माथाई, इलिटरेट लेडी थी बेचारी, वो झोपड़ी में रहती थी. तो उसने बोला, किसी को पूछा, यार इधर बारिश क्यों नहीं हो रही है? मेरे बचपन में तो यहाँ बहुत बारिश होती थी. तो उसने बोला, भाई देखो पेड़ वेड़ काट दिए इसलिए वो बारिश नहीं हो रही है, अभी तो होगी भी नहीं. उसके दिमाग में बैठ गया पेड़ लगाना है. वो रोज उठती थी, बाल्टी लेती थी, थोड़ा पानी, थोड़ा फावड़ा ले जाके एक पेड़ लगाती थी. आजू बाजू वाले लोग बोले, अरे ये क्या कर रही है, इसको हो क्या गया है? धीरे 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 1 के 100 हो गए, 100 के 1000 हो गए. लोगों को पता चलने लगा कि यार इसका इफेक्ट है. ऑक्सीजन लेवल बढ़ा. एक दिन ऐसा है कि करोड़ों पेड़ लगा दिए उस लेडी ने. मूवमेंट बढ़ गया, हजारों लोग आ गए उधर.
जब उसका काम देखा लोगों ने, thousands of people contributed and they started doing. और सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह बन गई वो, उसके जीते जी 25-30 साल के अंदर, और उसको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल जानते हो आप? कितना प्राइस क्या है नोबेल का? कितना पैसा मिलता है नोबेल? 60 crores मिलता है जिसको नोबेल मिलेगा उसको। सोचो, और उसने क्या किया होगा 60 करोड़ का? फिर 60 करोड़ पेड़ लगा दिए आने वाली जनरेशन के लिए। दिस इज व्हाट सस्टेनेबिलिटी। दुनिया में ऐसे ऐसे ग्रेट लोग हैं, इसलिए अभी भी ये दुनिया ऐसे चल रही है। सब लोग बोलते हैं लेकिन वो सच है। मेनी पीपल आर देयर हु डू नॉट रन ओनली आफ्टर मनी। पैसा चाहिए जिंदगी में, लेकिन वो जरूरत के लिए चाहिए, लाइफस्टाइल के लिए चाहिए। हद से ज्यादा हो गया दिमाग खराब कर देगा, और नहीं तो उसका मैनेजमेंट आपके पास चाहिए। यू शैल बी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, देन यू कैन मैनेज। इज दैट क्लियर? सर होप इट इज अंडरस्टूड। तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस में छोटी छोटी चीजें हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, टेकिंग केयर ऑफ ट्रीज। अभी बर्ड्स है, अभी समर का तुम ये देखो टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, 45 डिग्री था, अभी चल रहा है 48-49 हो जाएगा अभी 15 दिन में। तो आप घर के आसपास जो बर्ड्स है, एक मिट्टी का एक बर्तन रख दो, उसमें पानी डालते हो दिन में 2-4 बार, उनको भी पानी लगता है, वो बोल नहीं सकते। जो बेजुबान जानवर है, पंछी है, तो उनके लिए भी सोचना हमारा काम है। बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स। ईश्वर ने हमें ह्यूमन बीइंग बनाया, सारी फैसिलिटीज दी है, हमको बोलना सिखाया, हाथ पांव दिए, विचार दिया। जो चीज चाहिए वो हम खा सकते, पी सकते हैं, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? तो उनके बारे में सोचना, अगर आप उनके बारे में सोचने लगोगे तो ऑटोमेटिकली ऑलमाइटी विल लव यू ऑल। दिस इज माय वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग टू ऑल ऑफ यू। तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। दिस आर व्हाट द इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स। और ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, नो गट्स नो ग्लोरी, इसका मीनिंग क्या है मालूम है? ज्यादा हिम्मत त्याला किम्मत। जिसमें हिम्मत नहीं उसको कीमत नहीं। यू आर माय स्टूडेंट्स, सो यू शैल बी पावरफुल। इज दैट क्लियर? बट योर इंटेंशन शैल बी वेरी गुड ऑल द टाइम्स। मेरी इतनी बात याद रखो, किसी से झगड़ा करना, मारपीट करना, हिम्मत लगा के इज नॉट हिम्मत। हिम्मत मीन्स द डेयरिंग टू डू गुड थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स, प्रोडक्टिव थिंग्स। इज दैट क्लियर? सो यूटिलाइज योर पावर ऑन गुड प्रोजेक्ट्स, दैट आई वांट टू से। So I hope it is understood. If any question is there, you can ask. Any question, any doubts? अगर किसी को कुछ बोलना है, you are at liberty to ask me any question. Say anything. ठीक है, आपने मेरी बात सुन के ली अच्छे से। You are very good students. ये 5 स्टूडेंट जो आए, जिन्होंने स्टार्ट किया लेक्चर, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सबके लिए मैं एक शेर बोलता हूँ और रुक जाता हूँ। देखो, जब स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, पढ़ते हैं, कंट्रीब्यूट करते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है टीचर। तो आपके लिए मैं एक शेर बोलता हूँ। हमारे मुस्कुराने की वजह आप हो, हमारी दोस्ती का मतलब भी आप हो। बोलो वाह वाह। हाँ, अभी सुनो। हमारे मुस्कुराने की वजह आप हो, हमारी दोस्ती का मतलब भी आप हो। जब भी मिलेगी खुशी हमें, तो हम ये सोचेंगे कि खुदा से दुआ करने वाले भी आप हो। थैंक यू।